वेलकम टू IT सपोर्ट एडवाइस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है वो कुछ लोगों की जो है वो एक्स बॉक्स में जो है वो कंट्री की प्रॉब्लम आती है। तो आज हम इसका सलूशन देखेंगे, हाउ टू चेंज योर कंट्री रीजन, और if Xbox Game Pass is not available in your region, how to solve this problem. Let's start. So first you can check here the xbox.com regions, यानी कि आप जो है वो मतलब Xbox की जो गेम्स हैं उसकी आप अपनी कंट्री किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है वो ये हिटमैन 3 स्टार्टर पैक, but there is no Xbox Game Pass is not available in your country. How to set this? No, minimize. अब हम इसको जो है वो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसमें सिस्टम में जाएंगे। No, there is language settings. This is the main part. ये एक चीज़ है जिसमें हम चेंजिंग करेंगे। दिस इज़ द मेन पार्ट। इफ़ योर लैंग्वेज इज़ नॉट अवेलेबल यूनाइटेड स्टेट्स, then you will add a language and United US. This is United States. You must need to install this first language, and then when you install, then you need to add this country region. First you need to add this up. Now change this country to United States because more anything is Xbox available in United States. Now that's fine, that's okay. Now close this and go to dismiss all. Now again I will start Xbox opening. The message has gone. अभी हम जो है वो इसमें से हमारा जो है वो मैसेज चला गया है। प्ले विद गेम पास and that's done. If you like my video, please subscribe to the channel and like the video. Thanks.